SSC CGL MTS examination 2024. Very important questions. You can download the PDF in the description. First question. Which article of the Indian Constitution mention about the salaries allowance of the chairman of deputy chairman and Rajya Sabha and the speaker, deputy speaker of the Lok Sabha? The answer for this question is Article 97 of the Indian Constitution mention the salaries and allowance of the chairman of and deputy chairman of the Rajya Sabha and the speaker of the deputy speaker and deputy speaker of the Lok Sabha. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का उल्लेख करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which schedule of the Indian Constitution are the salaries of the President, Governors, Judges of Supreme Court and High Court mentioned? The salaries of the President, Governors and Judges of the Supreme Court and High Courts are mentioned in the second schedule of the Indian Constitution. राष्ट्रपति, राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Indian Constitution deals with the salary of the President of India? Salary of the President of India. Article 59 of the Indian Constitution deals with the salary of the President of India. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 भारत के राष्ट्रपति के वेतन के संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does Article 125 of the Indian Constitution pertain to? Article 125 of the Indian Constitution pertains to the salaries, allowance and rights in respect of living of the judges of the Supreme Court. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों और आवश्यक के अधिकारों के संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Indian Constitution discuss the salaries of the judges of the High Court? Salaries of the judges of the High Courts. The answer for this question, Article 221 of the Indian Constitution discuss the salaries of the judges of the High Court. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन का संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द Comptroller and Auditor General of India, Auditor General of India, CAG defined? Article 148 of the Indian Constitution defines the allowance and privileges of the Comptroller and Auditor General of India. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखिक परीक्षा CAG भत्तों और विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is mentioned in Article 106 of the Indian Constitution? Article 106 of the Indian Constitution mentions the salaries and allowance of the Member of Parliament, MP. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों का उल्लेख करता है. Thank you for watching. These are the important questions for SSC MTS CGL examination 2024.